me to take in this stream, then please write it here. It's okay. We'll park it here and then we'll talk about it later. And at once, like in next 2 minutes, I'll just start and I'll tell you about what we are going to discuss today, what we are going to talk about. Okay, Gaurav. I hope we are able to do something around it today. And I'm not sure if you have used the approach that we are going to discuss today. And okay. Okay. Sure. Yeah. We'll be discussing it. And yeah. Anyone else, if they have any questions, then or any thoughts, any expectations? Hi, Jeevit. Anyone here from my last stream? So this is my second stream, and 2 days back I did my first ever stream on Creator. Anybody here from the first stream? Because what I'll do is I'll also in the first 5 minutes I'll if most of the people right now are new, then I'll give a description about what we did in the first stream and a bit about me, and we'll begin. We'll directly go on to it. And this is more of a working session. So everyone here, Jeevit, Gaurav, Anishka, it would be good that if you can get a A4 size paper, um, blank, blank A4, and a pen with you, and we'll try to bring some outcome out of this session. Hi, Priyansh. Okay, so it's 6, and so hi everyone. My name is Bhuvnesh. This is my second stream on Creator, and hi Gandharv. And today we are going to talk about habit and ritual tracking. So I'm not going to talk about habit formation or any like we'll talk a bit about science here, but not going to. It's not going to be a knowledge overload. We'll try to take action through this session, and let's see where we can go through this. Okay, so are we going to talk about journaling in any way? Yes, we are. And we'll come to it that what are we going to talk about? Only people here will decide that what we are going to talk about. Okay, so quickly about myself. I'm Bhuvnesh and I belong from Jaipur. And why I'm doing this is that I shared this story in my first stream that right from my childhood. I think the best time that I had, what I can remember when I was really joyful, and when all these stresses of the environment, all the anxieties of that you get through while navigating through this life, childhood was the best time, and I'm trying to get back to that kind of a thing when in these current times. So a very quick note about my journey. So um, at the when I was in class 10th and 11th, at that point of time, I used to play a lot. I used to be very much involved in the moment, and suddenly my life changed. And when I started seeing my peers that they are preparing for JE, and I thought, okay, chalo, JE ke liye prepare karte, because everyone around me is doing so, and because there was some kind of a promise that it's going to be it is the next big thing or something is happening there. And I tried my first attempt. I didn't get through. Then I dropped for 1 year, and then I got through. I got into IIT Delhi, and somehow what I was doing around for till 2014 was that I was doing something. I was living a life that was designed by people around me, by my environment, by my society. And I have no grudges with anyone around that, because at that point I would say I was less self-aware. But over my journey after 2014, with all the ups and downs that I've seen, with all the experiments that I've done, with all the um, uh, challenges that I've taken to design my own life in the way I want. Now that comes with a lot of uh, uh, problems, its own set of challenges, and you fall a lot of times. There are a lot of traps to be there, and that is what we discussed in our first stream. That how do you design your life
of contentment and well-being. We talked about what well-being is. I'll quickly share my screen, and just like for 2 minutes, I'll give you an overview what we discussed in the first stream. Why I'm mentioning first stream right again and again is so if anyone who has not been there, they can just watch this after today's video. You'll really like it, and that would also form a base of today's session that we are going to do. I'll quickly read the comments. Uh, Gaurav, solid guess. Okay. Anishka makes me feel good. I'm on the right track. Okay. Shall do that, man. Hi, Shivansh. Um hi, Shivansh. Thank you. So, just give me a second. I'll share my screen. Okay. I hope everybody can see my screen right now. So last session में, and please tell me in comments in the chat box अगर किसी को हिंदी like if they are not able to understand Hindi, because I'll be using both Hindi and English, so that एक level of that balance is there, and I'm also more happy talking in both languages. But अगर किसी को भी, if anybody has any issues that they are not able to understand, please write it in chat box. I'll take care of it. Okay, so जो हमारा first stream था, what we discussed there was that what is well-being. We talked about it, and usually when we talk about well-being, it is around physical health that we think, or maybe around emotional health. Then we talked about different frameworks. What are the dimensions of well-being? What are different frameworks that are available that researchers, scientists, social scientists have found out that okay, these are those dimensions around which we can categorize a well-being of a person. So we talked about wheel of life. We talked about positive psychology construct, which is called PERMA. You can have a look at it. I'll share the link of this Figma file. And we also talked about psychological capital, again, a positive psychology construct, what they do. And from there on, we talked about uh, the sense of Eastern well-being. So I'll not spend my time over there. Just wanted to give you an idea कि हमने जो wheel of life की बात की थी उस time. So what right now, what I mean by wheel of life, quickly इस पर बात करते हैं कि जब हम well-being के बारे में सोचते हैं तो हम इस तरह सोचते हैं कि जो लाइक हाँ, मेरी भी वेलबींग अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि आई एम लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ, आई एम स्ट्रेस्ड, थोड़ी आई 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 रिमेन बिट एंग्शियस, थोड़ा एंग्शियस रहता हूँ आजकल, और ऐसा ऐसा बाकी मेरा करियर या लेट्स से दूसरी चीज़ें ठीक चल रही हैं. बट हम उस डायमेंशन को, जो वेलबींग का एक बहुत बड़ा स्कोप है, उसको बहुत ही छोटा कर देते हैं, नैरो डाउन कर देते हैं कि वेलबींग पे मैं यार मैं अपनी ना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दूंगा, मैं करने लगूंगा अभी 10,000 स्टेप्स एंड ऑल, ये जो न्यूट्रिशन और ये डाइट करना होता है इसे करूंगा, आई डू इट लेटर. बट दैट इज नॉट व्हाट जस्ट वेलबींग इज. वेलबींग इज दैट इज वन, जस्ट वन डायमेंशन, वन डिपार्टमेंट ऑफ वेलबींग. सो इधर जो आप व्हील ऑफ लाइफ देख रहे हो, जस्ट अज्यूम दिस व्हील ऑफ लाइफ एज एन एनालॉजी कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ दैट यू आर कैरिंग, योर ओन एग्जिस्टेंस, दिस इज अ व्हील. Now, on this wheel, there are these different spokes which you see right now: finances, career, health, spirituality, community, physical environment, fun, creation, friends, family. What dimension है? कोई 7 dimension बोलता है, कोई 8 बोलता है, कोई 5 बोलता है, 9. It doesn't really matter. What matters here right now is, and what we want to take away quickly is, कि जो एक डायमेंशन है, व्हेन यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू थिंक अबाउट योर हैबिट्स, कि यार मुझे इस टाइप की हैबिट चाहिए, या दीज आर द काइंड ऑफ गोल्स दैट आई वांट टू हैव, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स यूजुअली सो मच क्रम्बल्ड अप, दिमाग में पूरा का पूरा मिक्सड अप होता है, और उसमें से हम कुछ पिक कर लेते हैं. और वो यूजुअली कहाँ से होता है? वो हमारे सबकॉन्शियस से पिक होता है. वो कैसे सबकॉन्शियस से पिक होता है? मे बी वी आर, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, we are meeting some kind of people and we are hearing something कि okay, these are the kind of things people are doing, जो एक एस्पिरेशन लेके आता है, या मे बी एक डिजायर लेके आता है, या मे बी यू आर वॉचिंग टू मच ऑफ लेट्स से यूट्यूब चैनल, और मे बी यू आर वॉचिंग टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट. व्हाट इट सबकॉन्शियसली फीड्स इनटू योर ब्रेन सिस्टम इज, वो आपके डिफरेंट टाइप के गोल्स और एस्पिरेशंस में आता है. दैट इज डूइंग समथिंग unconsciously. So that's why the title of today's stream, how to mindfully build your habit and ritual tracker. I could have written how to build your habit and ritual tracker. So वो habit और ritual जो आप अभी, let's say I ask you कि यार आप
हैबिट्स बताओ, आप कौन कौन सी हैबिट्स बनाना चाहते हो, चलो आज उसको ना हम बनाएंगे, एक जगह पर ट्रैक करेंगे, एंड आई गिव यू अ वे हाउ टू बी देयर, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. नो, before that, before reaching that, I want you to think it from a mindful perspective. What is mindful? That being aware about what your goals are really are, or what they should be, right? So abhi agar main aapse, so I have a question for every one of you. I'll also read the comments in the meanwhile. um, okay, no comments till now. If anybody has any questions, again, anything, please ask. आई एम रनिंग बिट फास्ट राइट नाउ, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट स्ट्रीम में कवर किया था, बट अभी कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था फॉर द पीपल हु हैव जॉइंड टुडे. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, by the time I'm speaking, please think of 5 to 6 goals or 5 to 6 habits जो आप चाहते हो. So Gaurav, let's say you procrastinate, as you said. Uh, Gaurav नहीं बोला था ना, I'm sorry, procrastinate. Yeah, Gaurav said. Okay, so Gaurav, let's say if you procrastinate, सोचो कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो तुम चाहते हो. अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे होते, या एनीवन हियर who are not doing something, who want to reach somewhere, or who are thinking कि यार ये मेरा हो रहा होता तो सही होता, like life would have been fine. Just think of 3 or at least 3 or 5 such habits, और उसको एक बार आप A4 साइज पर प्लीज लिख लो, and while we are talking you can write it, and I'll continue and we'll visit it again. Okay, so व्हील ऑफ लाइफ की मैं बात कर रहा था कि अपने इस लाइफ को एक व्हील समझते हैं एक बार, एक एनालॉजी के लिए. अब अगर व्हील, लेट्स से हमने इसको रेट किया, ये इसका रेडियस है, इसके रेडियस को डिवाइड किया 10 पॉइंटर्स में, बेसिकली एक सब्जेक्टिव असेसमेंट. ये हमने पूछा यार फाइनेंसेस आपके कैसे हैं, तो किसी ने उसको 8 रेट कर रहा है, कोई 4 रेट कर रहा है, कि फाइनेंशियली हाउ डू यू थिंक यू आर डूइंग. लाइक क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक यू आर डूइंग इन दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हाउ आर यू डूइंग फाइनेंशियली. एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट आंसर. कुछ लोग सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे, कुछ लोग का बहुत पैसा होगा इन जनरल, लेट्स से थ्रू सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, बट दे सम माइट बी सेटिस्फाइड, सम माइट नॉट बी सेटिस्फाइड, तो ये अलग होगा. सिमिलरली करियर, हेल्थ, कम्युनिटी, स्पिरिचुअलिटी अलग अलग. नाउ सी टू दिस, कि अगर मान लेते हैं किसी का इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, किसी किसी टाइप की रेटिंग है, तो जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ अ व्हील दिस इज. दिस इज सच अ इम्बैलेंस्ड व्हील. ऐसी उबड़ खाबड़ सी ऐसी एक व्हील देख रहे हैं राइट नाउ, कि अगर इसके थ्रू आप लाइफ चलाना चाहोगे तो बहुत पेनफुल लाइफ होगी, राइट? मतलब काफी पेनफुल लाइफ रहेगी, बिकॉज इधर से आप जाओगे, कभी आपको एक धक्का लगेगा, फिर दूसरा धक्का लगेगा, हर एक डायमेंशन विल कीप कॉजिंग यू. सो यू विल थिंक यार आई एम डूइंग वेरी वेल, हेल्दी, मतलब मैं 10,000 स्टेप्स कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, सब कुछ है, बट सम डे यू फाइंड योर सेल्फ इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि यार इधर तो मैं कहीं ना कहीं लैक कर ही रहा हूँ. एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऐसा कुछ नहीं है कि आप फाइनेंशियली कहीं लैक कर रहे हो या किसी और जगह पे लैक कर रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम, आपको हर जगह 10 पॉइंट होना चाहिए. दैट्स नॉट द पॉइंट है. द पॉइंट हियर इज दैट you should just be aware, you should be mindful of what your life consists of. And when you want to make amends to the current life, you should get your goals, so you should think around habits in this way, कि ठीक है जहां पर मैं लैक कर रहा हूं, लेट्स थिंक कि ओके ये वाली हैबिट मेरे लिए अभी शायद इंपॉर्टेंट होगी. So going back to the initial example, कि right now let's say if you're talking to a few people or you have some environment with you, and you think यार ये करना चाहिए, and I'll talk about myself. कई बार मेरे साथ क्या होता है, I like music a lot, and that too on the psych trance or on the EDM side. और उस सुन करके मुझे काफ़ी बार डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस आते हैं कि यार आई वांट टू लर्न, आई वांट टू बी अ डीजे, सो आई वांट टू लर्न हाउ टू डीजे. एंड इट्स अ फाइन गोल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आई हैव सेवरल अदर थिंग्स which I ignore by the time, जो कि let's say मेरे health issues are something which I should be looking at, but of course I'm not aware कि यार क्या चल रहा है. I'll be like, I'll do. I know कि मुझे थोड़ा अभी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है, and all of that stuff. So this is something where this mindful thing comes. Now let's get to the habit and the ritual tracking, and we'll also talk about habit and ritual में क्या फर्क है. If anybody has any questions till now, please ask your questions. And एक बार I'll just also stop sharing my screen. Just a minute. हाँ, एक ये एनालॉजी और देनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन आवर फर्स्ट स्ट्रीम,
दैट इफ यू इमेजिन योर लाइफ, तो लाइफ के साथ क्या है, लाइफ एक साइन वेव की तरह है। कॉस वेव भी हो सकती है, किसी भी टाइप की वेव हो सकती है, इट्स नॉट कि साइन वेव ही है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ डिफरेंट टाइप की वेव है। आइडिया प्रॉब्लम ये होता है व्हेन यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ, और व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन। आजकल हम बहुत सुनते हैं ना कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब क्या उस बी इन द प्रेजेंट मोमेंट का? उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अपने लाइफ के, जैसे आपने सुख और दुख को अगर उसी इंटेंसिटी, उसी एम्पलीट्यूड के साथ ही उसको देख रहे हो, तो योर लाइफ विल ऑलवेज बी लाइक दिस। ये तो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। आपको जब बहुत ही खुशी मिली है किसी चीज को लेकर के, यू अचीव्ड समथिंग, यू हैड अ डिजायर एंड यू गॉट इट, यू डिड अ, यू आपने बहुत पार्टी करा और आपको बहुत अच्छा लगा, and then it crashes. You know, everything which goes to top comes down, it crashes. हर जगह देखने को मिलता है, चाहे न्यूरोसाइंस में देखें हम डोपामीन के बारे में, that also happens. Everything goes up, then it crashes. So assume अगर अगर हम एक balanced life की बात करें, so a balanced life would be something like a straight line where the life is ongoing. You see that okay, there's कि कुछ अच्छा हुआ है, you're okay with it, that yeah, something has been fine. और कुछ खराब हुआ है तो you know that okay, time will be fine. You know that life, if something has gone down, it will come up. Now what happens is, जब हमारा माइंड स्टेट जब काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ, होता है ना कई बार वी परसीव थिंग्स, इवन वी इवन स्लाइटेस्ट ऑफ अ थिंग वी परसीव इट इज वेरी नेगेटिवली, और हम किस चीज़ का बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि यार ये बहुत गलत हो गया, ये ओवर थिंक। तो आई गिव यू एन एनालॉजी जो बुद्धा बोलते हैं। बुद्धा सेड दैट देयर आर टू एरोज ऑफ सफरिंग। One arrow is what life throws at you. So what right now what you see here, this sine wave, is that first arrow. The second arrow of suffering is your reaction towards it. So second arrow is more painful. That is what it said, and in different other philosophies this is what it said, कि जो आपका रिएक्शन होगा टूवर्ड्स दैट इज समथिंग विच विल मेक दैट डिफरेंस कि इसकी सफरिंग कितने होने वाली पेन की। क्योंकि लाइफ तो अभी नीचे गई है तो ऊपर आएगी, बट अगर आपने उस सेकंड पेन ही इतना लिया कि उसका एम्पलीट्यूड आप इतना नीचे जा चुके हो कि जब आपकी लाइफ का एम्पलीट्यूड ऊपर गया है तब भी आप हमेशा इस लाइन के नीचे ही हो। क्यों? क्योंकि आपका जितना आपने एक्सपीरियंस किया उस डाउन एम्पलीट्यूड को या उस डाउन सफरिंग को, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, मतलब वो आपको यू जस्ट वेंट टू मच डाउन देयर। अगेन, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? द होल पॉइंट हियर इज कि माइंडफुल होने का मतलब क्या है, एंड हैबिट्स और रिचुअल में माइंडफुलनेस का व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। ओके, नाउ वी कम टू, जस्ट अ मिनट। ओके, आज का हमारा एम ये है, I'll show you this. I'm not sure if you can see this. बहुत ही बेसिक। I'm not asking you to download any app. Okay, I'll read the comments. So you said if you are not excelling in one arena, it's chill. How man? I'll come to it. We'll just talk about it. I'll just show you कि आज हम किस टाइप का एक आउटपुट लेना चाहते हैं स्ट्रीम से। Okay, so बहुत ही बेसिक। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डाउनलोड एनी ऐप। आई एम नॉट आस्किंग कि यार इस ऐप को डाउनलोड करो, अपनी इस जगह पे हैबिट्स लोगो, इस टाइम पर डालो। इफ एनी ऑफ यू हेयर, if they're struggling through their habits, or they're struggling in general through their life, they would have downloaded any productivity app or any mental health app. नहीं किया है तो just try it out. Sometimes it works, for some people it doesn't work. वो एक मे बी इट्स अ नेक्स्ट स्टेप टू समथिंग, बट एक बार हम ये तो देख लें कि अभी हम स्टैंड कहाँ करते हैं। लेट्स फर्स्ट बी माइंडफुली ऑब्जर्व दैट हम अभी स्टैंडिंग कहाँ कर रहे हैं। हम मे बी वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ हेयर एंड वी वांट टू डायरेक्टली रीच देयर। यार ऐसी एक मैंने लाइफ इमेजिन कर रखी है जहाँ पर मैं सुबह उठ भी रहा हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यूजली दिस व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि ये होनी चाहिए लाइफ। सुबह उठ भी रहा हूँ, फिर सुबह आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, देन आई विल रीड अ बुक। यूजली कहाँ से आई हैं? आई बीन रीडिंग, सीइंग, ये सब देखते हैं हम, तो लाइक वी डेवलप, स्टार्ट डेवलपिंग। डज इट रियली सूट मी? इज इट रियली माई नेचर फॉर मी टू बी एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ अ रूटीन? क्या ये मेरे लिए है? मैंने तो बहुत पढ़ा, मैंने बहुत देखा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से सुना, उनकी लाइफ में चेंजेस देखे, आई थॉट ओके ये करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट डिजाइनिंग योर लाइफ इज, वेयर दैट कम्स इनटू पिक्चर, कि डिजाइन तो आपको ही करना है, आप ही डिजाइनर हो अपनी लाइफ के। अब उस डिजाइन को किस फंडामेंटल्स पे कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये है हैबिट ट्रैकर, बहुत बेसिक सा। हो क्या रहा है इसमें, इधर वी राइट आवर हैबिट्स, और लेट्स से
एक्शंस, आई विल नॉट कॉल इट हैबिट्स क्योंकि हैबिट्स बहुत अब्यूज हो चुका है ये वाला वर्ड. We write our actions here, what actions we want to do. Okay, and then every day nothing, at the end of the day हमारा लास्ट एक्शन जो होगा सोने से पहले वो ये होगा. आप इसको डे में भी कर सकते हैं, हम जस्ट विल सी हम इसे कैसे कर सकते हैं, बट लेट्स से एट द एंड ऑफ द डे योर एक्शन वुड बी इधर यू हैव टू मार्क कि मैंने आज कौन कौन सी चीजें की हैं. And this is a 21 day, and somehow this happened to be 21. I didn't want it to be 21, but it happened to be a 21 day tracker. And at the end of that tracker इधर मैं ये देखूंगा कि मेरी लेट से मैंने इधर लिखे थे अपने करीब आई थिंक 14 एक्शंस. इन 14 एक्शंस की एक स्कोर निकालूंगा कि आउट ऑफ 21 हाउ मेनी डेज आई वाज एबल टू डू इट. I'll tell you why we are doing this. कैसे even a 7 day thing would be working here. तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो फंडामेंटल है, वो ये है कि इफ यू विल नॉट मेजर समथिंग यू विल नॉट नो हाउ यू आर डूइंग. वेरी सिंपल थिंग. And this is where most of the people are lacking. I lacked it for 3 to 4 years. I would make habits. I would just pile up कि यार मैं ये 10 चीजें करनी है और कल से I just promise to myself कि मैं कल से करने वाला हूँ कुछ भी हो जाए. And I'll do it for 3 days, 4 days, and then I would start seeing कि चलो slack कर दिया है. I'll put my journal to work now. I will put my journal to work now. Okay, Anushka. So I was saying कि हम जब तक किसी चीज को ट्रैक नहीं करेंगे, we would not know how we are doing. So if you're students, you have a teacher above you who would be able to guide you, or who will be able to direct you, or who would be able to scold you. एटलीस्ट कोई देख रहा है तुम्हारी प्रोग्रेस. एक होता है ना, एक एग्जाम होता है, एक क्वार्टरली एग्जाम हो रहा है, या मिड टर्म्स हो रहे हैं, या फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, टू सी कि हाउ हैव यू बीन डूइंग, यू हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड हाउ हैव यू बीन डूइंग. अब यही पर्सपेक्टिव आप अपनी लाइफ में लगाने की कोशिश करो विद रिस्पेक्ट टू हैबिट्स एंड रिचुअल्स. अगेन व्हाट वी आर सेइंग इज, अभी हमारी जो लाइफ चल रही है, if you do not have a coach or anyone else, like that's where this concept that people start talking to life coaches, people start talking to different other mentors, is because कि यार मुझे कोई चाहिए मेरे ऊपर जो एटलीस्ट मेरा ये एग्जाम लेते हुए मुझे बस ये बता दे. ऐसा नहीं कि वो एग्जाम लेकर के ये क्वेश्चन पूछे तुम्हारी लाइफ का, कल तुमने क्या किया था, कल तुमने, नॉट लाइक दैट, बट समबडी हु इज देयर. नाउ व्हेन वी, अगर ऐसा नहीं है अभी कोई, what we can do at our own place is at least try to track ourselves कि यार हम कर कैसा रहे हैं. और वो ट्रैक करने के लिए यू जस्ट हैव टू हैव अ सिस्टम ऑन विच यू विल ट्रैक. और वो वाला ट्रैकिंग का बहुत ही सिंपलेस्ट सिस्टम. तो अगर मैं बोलूंगा कि एक हैबिट विच वुड बी कॉमन टू ऑल द पीपल हु आर हेयर राइट नाउ, जो मैं चाहूंगा कि आप सबके पास वो हैबिट हो. आप सबकी डिफरेंट हैबिट्स होंगी, आप सबके डिफरेंट एक्शंस होने वाले हैं विच विल बी पुटिंग हियर, बट व्हाट आई वुड वांट for everyone to have it, that one habit I will ask everyone to put it at the end of it जब हम उस पे आएंगे. बट वो एक मेरी तरफ से एक compulsory habit. If you're making this tracker today, you will have to put that habit, or you would have to put that action. Let's stop calling it habit. You will have to put that action. उस action को बस आपको एक habit बनाना है. And my promise to you, from my experience and with the people I've worked, and I've worked with my family and friends, and just by the way, this is nothing like a coach selling or something कि ये करो और उसके बाद you take my coaching and all. No, nothing like that. I'm not doing that. I'm just here to share my knowledge, because I have seen when I've shared it with people, it has helped me. So there can be a new perspective around it. So आज जो हम ये करेंगे उसमें ये होगा कि मैं बस चाहता हूँ कि over all the times you might have 10 things, 10 habits that you want to develop. I just want you to develop or follow one habit which is compulsory for all, which I will tell you. बाकी सारी चीजें जो हैं आपको जैसे करनी है आप करो, आपको बस ट्रैक करना है. ओके, ठीक है. वी गॉट द आइडिया कि ट्रैक करना जरूरी क्यों है. नाउ सेकेंड जो आइडिया आता है वो ये है कि हैबिट्स या किसी भी टाइप का गोल, हैबिट क्या है, एक किसी गोल के लिए आपका एक रिपीटेड एक्शन है, राइट?
Yeah, Gaurav, you'll have to stay till the end of the stream to know, because I'll tell you it at the end. बहुत ही simple है. A lot of people might get disappointed. Oh, ये है, we'll do it. But if you'll do that, तो सारी चीजें, काफी चीजें अलाइन करेंगी. So yeah, I was saying कि हम हमारी लाइफ के जो गोल्स बनाते हैं, हम जब डिजाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ, एंड my main theme for this channel and for all these streams would be how you will be able to design your life, and on what fundamentals will you be able to design your life, so that you can say यार ये मेरी डिजाइन है लाइफ की, ये मैं डिजाइन कर रहा हूँ इस तरीके से. These are the actions that I am taking, and these are based on, of course, my own experiences, but based on some kind of a philosophy, some kind of a belief system that I have, कि मैं ही बिलीव करता हूँ कि लाइफ इसी तरीके के बेसिस पर है. वो हमने फर्स्ट स्ट्रीम में बात की थी. ओके, सो हैबिट क्या है? रिपीटेड एक्शन फॉर सम काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक गोल that is there. What I have seen, and for the last 8 years, I've worked with startup industry. I worked with OYO rooms. I started my own company in 2016, and then after 3 years, I sold it, and then I joined another company, which was in biological discovery space. उधर मैंने 2 साल काम किया. देन आई टुक 1 year ब्रेक, एंड उस 1 year ब्रेक में आई वांटेड टू मेक सेंस ऑफ कि लाइफ रही कैसी है, एंड व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट इन माय करियर. नाउ व्हाट आई रियलाइज्ड, व्हाट एंड आई हैड सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जो मैंने सीखा उधर वो ये था कि हैबिट्स को लेकर के हम बहुत ही उसको जो डिफाइन करते हैं, बहुत ही पुअरली डिफाइन करते हैं. सो वन एग्जांपल, सो जैसे गौरव ने लिखा है राइट नाउ, मॉर्निंग वर्कआउट. ओके, वन ऑफ द गोल्स, मॉर्निंग वर्कआउट क्यों करना है? हर किसी के अपना रीजन हो सकता है. मेजरली लोगों का शायद मॉर्निंग वर्कआउट का रीजन ये होगा कि दे वांट टू स्टे फिट. एंड इफ यू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑन ईच एंड एवरी ऑफ द हैबिट, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कीप आस्किंग व्हाई, व्हाई व्हाई व्हाई, एंड तक, जब तक व्हाई का यू हैव द फाइनल आंसर. सो लेट्स से अगर मॉर्निंग वर्कआउट है, सो मॉर्निंग वर्कआउट इज अ वुड बी अ वेग वे टू से कि यार आई वुड डू, अब से मुझे मॉर्निंग वर्कआउट करना है. हैबिट्स को लेकर के देर इज अ सिस्टम, और हैबिट्स और लेट्स से गोल सेटिंग को लेकर के देर इज सिस्टम विच इज कॉल्ड OKRs, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स. स्टार्टअप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये. एक स्टार्टअप कंपनी, अपने आप को आप एक स्टार्टअप ही समझो कि आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो, आप एक स्टार्टअप हो और खुद को बिल्ड करोगे, खुद को ग्रो करोगे, खुद में इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, बहुत कुछ करोगे, राइट. तो सिमिलरली स्टार्टअप इंडस्ट्री में जो ये चलता है वो ये चलता है कि वील हैव ऑब्जेक्टिव्स. एक ऑब्जेक्टिव होना क्या है, लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू, it's a brief statement, and then there are key results. Those key results are something which are measurable. That makes all the difference. So let's say when I say morning workout, so my objective is to get fit. हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है guys. I'm not saying कि हर किसी का फिटनेस ही ऑब्जेक्टिव होगा, किसी का कुछ और ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट लेट्स से my objective is to get fit. What is the key result? Let's say 2 key results or 1 key result of it is that I would, like let's say हमने एक टाइम स्पेसिफाई किया उसके अंदर, that at 7:30 or first thing in the morning, or let's say at 8, I would do a 30-minute workout. More specific, now you know कि मैं 30 मिनट के लिए करूँगा, 15 minutes के लिए करूँगा, whatever that time. But I'm trying to say is there is a key result which you can track. Let's say in that habit tracker you write 30-minute exercise. बस आपने एक एक्शन लिखा है कि ये 30 मिनट का एक्सरसाइज मेरा एक एक्शन है. You're tracking it every day. If you did 15 minutes of exercise, you can't put it there. If you did 0 minutes of exercise, of course you can't put it there. If you do 30 or more than of it, you put your mark there कि आज I did it. So the basis of first, it's important कि आप habit को build कैसे कर रहे हो, like how are you putting it out. आप ये किसको, मतलब आप कौन हो और आप ये किसको गाइड कर रहे हो, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट. दैट वे इफ आई से अगर आपको ये नेविगेट करना है कि आप अपने आप को थर्ड पर्सन में ही तो कर रहे हो कि यू आर आस्किंग समथिंग इन योर माइंड, राइट. लेट्स कॉल इट ईगो, कि आप उसको बोल रहे हो, या आपका ईगो आपके इंटेलेक्ट को बोल रहा है कि प्लीज हेल्प मी डू दिस, कि मुझे ये करना है मॉर्निंग में. ये एक फोर्स्ड एक्शन है, राइट. तभी प्रोक्रेस्टिनेशन आपको वो चीज नहीं करने दे रहा किसी को भी. तो एक फोर्स्ड एक्शन ले रहे हैं हम. अगर वो फोर्स्ड एक्शन क्लियर है, अगर आपको किसी डायरेक्शन में जाना है और आपने कहा इधर से चले जाओ, जैसे लेट्स से मुझे इधर से जाना है चंडीगढ़, इफ आई आस्क समवन एंड दे टेल मी हाँ इधर से चले जाओ 300 किलोमीटर्स है इधर से, इट्स यू विल रीच देयर.
would you be able to reach there properly? और वुड समवन टेल यू कि इधर से लेट्स से इधर से आपको ये बाईपास लेना है, बाईपास के बाद फॉर 100 किलोमीटर यू हैव टू बी स्ट्रेट एंड फ्रॉम देयर ऑन ऐसा ऐसा वट एवर दैट इज. सो यू वुड बी इन अ बेटर स्टेट वाइल यूर ड्राइविंग. आप जो गाड़ी भी चला रहे हो आपको पता होगा कि कब आपको गाड़ी तेज करनी है, कब स्लो करनी है. अगर आपको ये पता है कि 300 किलोमीटर तक जाना है और आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सो यू वुड मे बी यू विल स्टॉप एट एवरी 20 किलोमीटर एंड आस्क यार मैं सही जगह हूँ, सही डायरेक्शन में हूँ एंड ऑल दैट. Similar is what how you we need to just give our minds that feed. That is what training is. कि आपने माइंड को एक फीड दे दिया कि ओके दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ये मैं मॉर्निंग में मुझे मॉर्निंग में ये करना है या वट एवर ऐसा ऐसा करना है, आज वो हम करेंगे. ओके, नाउ वी हैव गॉट दैट आइडिया. एक फाइनल डिस्टिंक्शन और कर लेते हैं एंड 30 मिनट्स आर ओवर. फर्स्ट हाफ वाज फॉर जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन ऑफ हैबिट एंड ट्रैक क्यों करना है, माइंडफुल क्यों होना है, माइंडफुल होने के लिए क्या प्रिंसिपल यूज करेंगे. फॉर नाउ वी आर यूजिंग व्हील ऑफ लाइफ, वील यूज दैट. एंड सिमिलरली ये हमारे 30 मिनट्स का इनिशियल एक हो गया. नेक्स्ट 30 मिनट्स और लेट्स से नेक्स्ट 20 मिनट्स व्हाट वील डू इज we'll create this habit tracker. मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस habit tracker को बनाएं. And how we'll do it, I'm just going to tell you. But there's a small slight difference between a ritual and a habit. And ritual is something which is non-negotiable. So usually rituals are associated with religious activities, purified activities, जैसे कि आप prayer कर रहे हैं, या if you're doing performing some kind of a religious action. Let's take that concept into something that we want to do here. So with आपको हैबिट्स बहुत सारी करनी है, लेट्स आपको कोई बैड हैबिट हटानी है, वील राइट सम एक्शन टू इट, बट देयर शुड बी सम आइडेंटिटी ऑफ योर्स व्हिच यू कैन से ये मेरी रिचुअल है. लाइक इफ समबडी हैज टू डिफाइन यू, अगर आपको कोई जैसे बोलता है कि यार भुवनेश ये है एंड ये करता है, एनीथिंग एग्जांपल कि ये सुबह इसको सुबह 7 बजे चाय चाहिए ही चाहिए. आई डोंट नो इसको क्या है, बट इसको सुबह 7 बजे. आई एम जस्ट सेइंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. इट नीड नॉट बी कि रिचुअल कोई बहुत ही हाई फाई टाइप का, बट काफी डिनर दे वुड वॉक, मतलब दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग फॉर देम. सिमिलरली आई दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैबिट एंड अ रिचुअल. कि जब आप हैबिट को बहुत ही रिलीजियसली रिपीट करते हो, एंड बाय रिलीजियस अगेन दिस कम्स विद अ वेरी प्योरिटी ऑफ थॉट, वी आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट हियर. देन यू स्टार्ट that that like those a few activities that you take, there should be a few activities which you should approach from a ritualistic perspective. वो प्रेयर हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो as simple as, and hopefully those are healthy activities that you want to pursue, but those can be anything. That can be, जब भी बोलते हैं ना आजकल sleep is a big problem among our generation, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कि यू शुड हैव अ नाइट रिचुअल. वो नाइट रिचुअल क्या है? नाइट रिचुअल किस टाइप की होती है? नाइट रिचुअल ये है कि यार बिफोर आई गो टू बेड 1 आवर बिफोर आई कट ऑफ फ्रॉम माई फोन. ये ऐसा करता हूँ मैं. उसके बाद बेडरूम में लाइट डिम कर देता हूँ, एनवायरनमेंट एक कूल होता है. After that, I just take some time with myself, let's say 30 minutes with myself, to calm my racing mind down. I may perform some breathing exercises or just some sort of mindful activity. Then I lie down and then I sleep, or either I hear sleep stories which aid me into sleep. So this is a ritual. कि ये एक set of actions हैं. These are set performed actions which have अदर पर्पज, एक डेफिनेटिव अदर पर्पज है. ऐसे इस एक्शन को एक एक सिंगली करने से देयर इज नो पॉइंट, लाइक कि मैंने लाइट बंद करी है, कि वो कहीं ना कहीं बिल्ड ऑन होके दे आर डूइंग समथिंग. सो सिमिलरली, जस्ट सो दैट देयर इज अ हिंज, देयर इज अ एंकर ऑन विच यू नो कि यार मेरी लाइफ इस पे तो हैंग करती है. सो एनीबडी ऑफ यू माइट फील कि यू नो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मुझे पता ही नहीं है मेरा डे कैसे स्टार्ट होता है, मेरा डे में बीच में क्या चल रहा होता है, डे कैसे एंड होता है. आई रियली डोंट नो, लाइफ इज वेरी रेकलेस. You should have one anchor, and I'm differentiating it from habit. That one anchor which you will look forward कि यार मैं कुछ भी किया नहीं किया, कुछ तो किया मैंने आज, मैंने कुछ तो अचीव किया आज के डे में. अगर वो रिचुअल आपने अचीव, एंड इट कैन बी एज सिंपल एज, फॉर मी इट वाज टेकिंग शावर एवरी डे. साउंड्स फनी, बट ठंड का टाइम है, मतलब ये वाली हैबिट या इसको एज अ रिचुअल आई स्टार्टेड मेकिंग इट इन समर्स, बिकॉज ठंड के टाइम में एज बैचलर्स
एज व्हेन यू वर इन कॉलेज, बहुत बहुत टाइम हो जाता था कि नहीं नहा रहे हैं, सबका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, सब इस तरीके से देख रहे हैं. बट वेरी वेरी सिंपल, राइट, वेरी वेरी सिंपल थिंग कि मैं शावर डेली करूंगा. दैट बिकेम माई एंकर पॉइंट कि यार आई डिड इट एवरी डे, आई जस्ट स्कोर्ड अ विन ऑन माई स्टार्टिंग ऑफ द डे. आप एंड ऑफ द डे पे भी कर सकते हो, बट एट द स्टार्ट ऑफ योर डे आई स्कोर्ड समथिंग वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. बट दिस विल नॉट, मुझे रॉकेट नहीं बनाना है, आज तो नहीं बना पाऊंगा, बट मैंने एटलीस्ट ये किया जो कई लोगों के लिए डिफिकल्ट है. ओके, इनफ ऑफ द ज्ञान. आई हैड आस्क्ड यू कि सभी लोग 5, एटलीस्ट 3 या 5 कुछ ऐसी हैबिट्स होंगे जो लिखेंगे, जो वो सोचते हैं अभी कि यार ये होनी चाहिए, आई शुड डू इट, आई एम नॉट डूइंग इट एंड आई वांट टू डू इट, दैट काइंड ऑफ थिंग. Yeah. So if people are comfortable here, we can now begin our working session. Please have your A4 size papers with you. Please have your pens with you. आप अभी क्या कर सकते हैं? What you can do is you can just have one column here where you'll write your actions. एक कॉलम में मैं बहुत ही रफ बनाने को, we are trying to do it very rough, but we'll use it faithfully and ritually. Okay. Either ek we'll create a line as a distinction. Here we'll put the dates. So let's say today is 6th. So you start with 6th. You start putting dates till the end of जहाँ तक ये page end जाता है. You leave another column here. That would be your score. That would be your marking. That would be your own assessment. You would be your own teacher. To see कि यार मैंने perform कैसा किया है. मैंने 10 चीजें सोची थी, 10 एक्शंस करने की. ये आपका जजमेंट डे होगा आपके खुद के लिए, खुद को फेस करने के लिए. ना कि 3 महीने बाद आप खुद को फेस करोगे मैंने कुछ ही नहीं किया इन दी एंड. आई वाज थिंकिंग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये करूंगा वो करूंगा, ट्रैक भी नहीं किया, और 3 महीने बाद जाके हिट हुआ. एंड दैट ब्रिंग्स यू डाउन फॉर अनदर 1 or 2 months कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, आई एम जस्ट यूजलेस. मैं लाइक पीपल अराउंड मी आर प्रोग्रेसिंग एंड आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. वो वाली फीलिंग यूजलेस है. वो आए उससे पहले यू हैव अ सिस्टम विच विल हेल्प यू जज योर सेल्फ. एंड दिस जज इज नॉट दैट जज, इट्स जस्ट लाइक अ जजमेंट थिंग कि आपने अपने सामने असेसमेंट रखा है and you are just marking yourself there. Okay, so you keep a space here, you have put the dates here, you have put this here, and yeah, बाकी इसको हम मार्क करेंगे. So we have started. Yeah, Jeevat, better than having other people judge us. That's true. और जब खुद का जो जजमेंट होता है ना, खुद का जो असेसमेंट होता है, when you face yourself, it can be very relieving, very revealing, and very realizing कि something hits you. Okay, so everyone, I had asked you कि आप 5 habits लिख सकते हैं जो आपने लिखी हैं. If people are comfortable, if anybody wants to share any 1 or 2 habits कि वो ये build करना चाहते हैं, I just want to see how we are writing or how are we framing it, because that framing would be important. And if I can help you with it, if you want that help, that's okay. Otherwise, if you don't want that help कि नहीं मैं खुद ही लिखना चाहता हूँ अपने actions, that's also totally okay. But I'll wait for 1 minute if people want to share कि they want to do this, and maybe we can put some actions around it. Okay. And in the meantime, I'll read the comments. We have 1 minute. If anybody wants to put it in the chat box, Priyansh has already put that. Okay, so Priyansh had asked a question: why do you think collecting data is so important nowadays? Priyansh, I don't think I understand the question, but we'll take this up at the end, last 10 minutes when we'll have a FAQ. Okay, a lot of problems, if people just asked why more, a lot of problems would disappear. Yes, Shivansh, you're right. Breathing exercises are super underrated, definitely. I'm going to do a lot of streams on it. Just for everybody's information, I'm also a yoga teacher, a mindfulness teacher, and I'm very much interested into the pranayam aspect of yoga and just not the asana. So I'll be doing a lot of streams on those. But you're right. They are very useful, really. Yes, I agree. I've taken a shower for 2 days. Okay, yeah, better than having other people judge you. Okay, Priyansh has written, I'll try riding my bike more often.
Shivansh has written, I have written down to study for this diploma I've applied for. Priyansh, I was saying that taking help, tracking helps its data, and you can see that from. Okay. Okay. ठीक है. So we'll come to the habits that people have written. इसको हम किस तरह से modify कर सकते हैं. What I want now all of you to think here is, and please start writing that on one side. दूसरे मतलब जो other side of the page है उधर लिखेंगे, and actions हम end में लिखेंगे. Okay. Let me share my screen. And so Anishka, pranayam is the breathing. Like very simply put, pranayam is a breathing practice and breathing exercises. प्राणायाम इज उसका ब्रेकअप होता है, वो ये प्राण जो आपके अंदर लाइफ एनर्जी है, ब्रीदिंग is one form of that life energy. Ayam is expansion of it. So when when your prana is expanded, those practices which expand your prana and just connect your limited existence to a very universal existence is called pranayam. And asanas is the physical postures and जो आपने आसन सुनते हैं, padmasan, vajrasan, and all of that. Okay. What I wanted to do was, I wanted to come to wheel of life. And बाकी सब लोगों ने जो भी 5 हैबिट्स या 5 एक्शन सोचे थे, आई जस्ट वांट यू टू थिंक इन दिस वे. आज हम क्या करेंगे? आज हम जस्ट थिंक वील यूज व्हील ऑफ लाइफ टू क्रिएट आवर एक्शंस, टू क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स. सो ऐसा करना है कि टेक फ्रॉम हेयर फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, community, physical environment, fun creation, friends and family, spouse, partner, significant others. In सारे areas में we'll take one goal. So, for example, career को लेकर के, if you have some kind of, let's say you want to do a skill course, or you want to change your career, or you're looking for a job change, you want to make a resume, that's the end output that you want to do. So just write that plainly. So abhi what we are doing is, rather than following the 5 thoughts or 5 habits or any 5 actions that we have in our mind, yaar main ye karna chahta hu, main सुबह उठना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, I just want you to prioritize and divide all of these actions under these well-being aspects of your life. कि फाइनेंसेस के थ्रू सोचो, आपको लग रहा है फाइनेंसेस में आपका कोई गोल है जो आप करना चाहते हो, किसी को सेव ज़्यादा करना है, या किसी को लेट्स से इन्वेस्टमेंट को लेकर के दे वांट टू लर्न इन्वेस्टमेंट और दे वांट टू इन्वेस्ट मोर. होते हैं ना आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के गोल्स लोग बना रहे हैं. बट लेट्स डू इट माइंडफुली कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू डू. सिमिलरली करियर में, इफ देयर, और ऐसा हो सकता है कि अभी आपको लगे यार इसमें नहीं है, मेरे ज़्यादा गोल्स लेट्स से हेल्थ में है क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज या कुछ है. So maybe waking up is something that you want to help with. अब गौरव, when you were talking about procrastination जो है वो इन सब मतलब इन सारी चीज़ों को वो करता है, क्या बोलते हैं उसे, इन सब के अंदर से जाता हुआ जाता है. So it will not let you do anything that you want to write here for health, career. So procrastination हो सकता है आपके किसी गोल में ना, आप ये लिख सकते हो कि I want to remove procrastination. But that would not happen with writing a goal of that. That would happen with what we'll be doing. Okay. मैं इधर जब तक अगर किसी को इस व्हील ऑफ लाइफ में कोई एस्पेक्ट समझ नहीं आ रहा है, they can ask me. But our first direction here would be to just quickly prioritize and write what kind of any goal or what kind of any action that they think यार ये मुझे करने की जरूरत है. जैसे कि करियर में मैं आई टेल यू फ्रॉम माय एग्जांपल, एक जो एक्शन था वो मेरे दिमाग में ये था कि I want to be associated with a career which I see a purpose with. कि ये जो मैं करियर में अपने 20 साल इन्वेस्ट करूंगा, उसमें कुछ मीनिंग निकल रहा है कि इज देयर सम काइंड ऑफ अ मीनिंग दैट एवरी डे, इवन इफ माय डे इज नॉट गोइंग गुड, अगर उस वाले टाइम में इफ आई वांट टू डू समथिंग, सो वुड डज इट मोटिवेट मी टू कीप डूइंग इट ओवर द टाइम. तो ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है. So this broad statement will turn out to be in one action which we'll talk about. So just try to put it here, and tab tak I'll just
look at the comments and would just suggest कि क्या action लिखे जा सकते हैं for what people have thought, what people have already written. But please, guys, try to do this. अगर किसी को कोई भी इसमें एस्पेक्ट समझ नहीं आ रहा कि यार ये स्पाउस पार्टनर सिग्निफिकेंट अदर ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस या कुछ भी, तो जस्ट आस्क मी, आई गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू around it. But this should be our basis to create what habits that we want. Okay, Gaurav, I just wanna start gymming and study for it too. So I wrote that. Explain physical environment. Okay. So Shivansh, physical environment would mean here that in what kind of environment are you living in? So that may be related to, let's say, if we talk about बहुत layers हैं इसके, एक layer जो है, let's say in what kind of a city you are living in, are you happy with the kind of physical place that you are, is it safe, मतलब बहुत अलग questions हो सकते हैं ना इसके, is it safe, is it, let's say आप दिल्ली में हो तो are you satisfied कि polluted है या pollution है, that kind of a physical environment, how are you doing that way in. दूसरा एक एनवायरनमेंट जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो आपके बेसिकली अराउंड है, इसको सिंपली अगर आपको समझना है तो आप जहां जहां भी जा रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल सेटिंग में जा रहे हो तो क्या आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा है, कल्चर अच्छा है, या आर यू सराउंडेड विद टॉक्सिक, मे बी टॉक्सिक कल्चर और टॉक्सिक पीपल और एनीथिंग. सिमिलरली आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, बेसिकली आपके जो आसपास की जो फिजिकल स्पेस है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इज इट something which is prospering you or is it something that is bringing you down, and is there some kind of a goal that you want to associate with it. So this is what was Gaurav, like, so gymming is actually a lot of science, it's a lot of boring stuff but required for gymming properly. Yeah, and Gaurav, I totally agree with you, and I'm so glad that you want to do it. Similarly, मेरा एक इंटरेस्ट है बॉडी की एनाटॉमी समझने में, कि मैं जब ये ऐसे हाथ उठा करके स्ट्रेच करता हूँ, सो व्हाट डज दैट स्ट्रेचिंग as just a mere physical activity has so much implication on my cognitive actions, and a lot of effect on, let's say, things like my self confidence, on my posture, and how does it affect the other aspects of your life. So yeah, definitely. So definitely gymming को उस तरीके से पढ़ना would be good. So अगर, let's say, Gaurav, if we talk about you, um, yeah, yeah, Priyansh. So if we talk about you, you want to start gymming. So what your action, one of the action would be कि I will do a 30 minutes gym. अभी के लिए we'll just write 30 minutes gym in your that book. इधर जहाँ पे हम actions लिख रहे थे, जैसे मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है. सबसे पहला मेरा था आई एक्सरसाइज. First thing, when I wake up, I want to do eye exercises because that helps you relieve with your headache. And eye का movement बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत स्क्रीन देखने की वजह से डिजिटल स्ट्रेन है. I had written prayer, online course for 2 hours, course creation for 2 hours, and similarly like this. So उसका मैंने टाइम सेट नहीं किया था इनिशियली. फॉर फर्स्ट 7 days आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इसको किस टाइम में डालूं. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो इसमें से फॉर गौरव, फॉर यू, व्हाट वुड बी बेनिफिशियल वर्क विल बी कि 30 minutes जिम, let's say, and very basic, 30 minutes gym. Up, you can just be clear, do you want you want to go out and do gym, or do you have accessories here? Mostly you would need to go out to do gym. तो उधर वाला फैक्टर आ जाएगा कि वो जिम कितना दूर है, ये वाली चीज है. उस वाले फैक्टर्स को आई डोंट वांट यू टू कंसीडर राइट नाउ, बिकॉज दैट्स व्हाट योर ब्रेन वुड लाइक टू ट्रिक यू. यार ये तो बहुत दूर है, नहीं जा पाएंगे, करूंगा ये करूंगा वो. व्हाट आई एम जस्ट राइट आस्किंग यू टू राइट इज दैट ये एक आपकी मार्कशीट है, इस मार्कशीट में बस आप ये लिख रहे हो 30 minutes जिम, दैट्स इट. आर यू डूइंग इट? सो इन 7 days यू विल रियलाइज, लेट्स से, कि मैंने नहीं किया, मैं गया ही नहीं, एक भी दिन जिम नहीं गया. व्हाट दैट काइंड ऑफ assessment of 7 days would tell you is that, hey, you know, जो बाकी जो चीजें थी वो अभी लाइन पे आ गई हैं क्योंकि now you have started tracking. So every day, when at the end of the day when you start tracking those, you see, oh यार ये I was not able to do it even when I had time. So next day I'll try to do it. So आपने मुझसे 7 days नहीं किया, then at least out of those 10 activities you would know
कि दीज आर दी 3 or 4 एक्टिविटीज जो मैं नहीं कर रहा हूँ, इन पे फोकस मारना जरूरी है। अभी राइट नाउ यू माइट हैव कि मैं 10 चीजें करना चाहता हूँ, और 10 चीजें आप 3 दिन करो, इससे बेटर है कि आप 7 चीजें तो 7 दिन कर लो, या 5 चीजें 7 दिन कर लो। बट बाकी जो वो क्या करेगा, इसको फोकस, एक फोकस लेके आएगा, लाइमलाइट लेकर के आएगा, स्पॉटलाइट लेकर के आएगा कि दीज आर दी 3 थिंग्स दैट यू आर रियली नॉट डूइंग, वेयर यू नीड हेल्प और वेयर यू रियली नीड टू मूव ऑन, कि इस पर अब डेफिनेटिव एक्शन लेना है, इस पर अब आपको आगे अपने टाइम के गैप्स एंड ऑल लगाने हैं। ठीक है, सो आई वुड, माई सजेशन वुड बी टू जस्ट पुट 30 minutes जिम। नाउ ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग दैट यू माइट से कि यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं लिखने से क्या होगा। सो द वन हैबिट दैट आई एम आस्किंग यू टू डू, आई जस्ट सुन आस्क, वो आपको पुट करनी है, वो है बस आपको वो हैबिट बनानी है, एंड things will turn out fine. I think so. And of course, we'll see. And hopefully, in our next streams, if Gaurav you join, we'll like to know how it's been going. Um there are a lot of research. There are a lot of research on stretching and how it releases cortisol. Yes, definitely, Priyansh. So, Shivans, what are eye exercises like? ठीक है, I'll answer this very quickly just at the end of it, once we are done this. Anishka, one step at a time, you mean? Yes. What I'm saying is कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप, मतलब आप ट्रैकिंग कर ही नहीं रहे हो, आपने सोचा कि यार मैं 6 चीज़ें कल से करना चालू कर दूंगा, आपके पास एक ऑप्शन ये भी है। और आपके पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने सोचा यार मैं 6 चीज़ें नहीं कर सकता, एक चीज़ पकड़ता हूँ, इसको करता हूँ। एक चीज़ को आपने 1 महीने 2 महीने तक ट्राई किया, नहीं करी, मतलब आप नहीं कर पाए, और आपने 6 चीज़ें भी ट्राई करी और आप उनको 3-4 दिन में उनको नहीं कर पाए, लेट्स से आप ट्रैक, और वो 2 केसेस में आप ट्रैक नहीं कर रहे हो। दोनों में नुकसान क्या हो रहा है, आपने अपना फर्स्ट वाले केस में जब आपने एक ही चीज करी, आप उसे नहीं कर पाए, तो यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम वेयर यू कुड हैव वर्कड ऑन अदर थिंग्स आल्सो, व्हिच इन योर करंट स्टेट यू आर मोर कंड्यूसिव टू डूइंग। बट तो ये तो हुआ जब आप एक ही सोचते हो कि नहीं मैं एक ही करूंगा। ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं नहीं यार मैं एक ही करूंगा, मैं और चीजें नहीं, बहुत सारे हैबिट ये सब नहीं करने, एक टाइम पे एक चीज करूंगा, विच इज फाइन, बट जस्ट ट्रैक इट। क्योंकि आप, हो सकता है कि वो आपके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर हो, सबसे बड़ा एक बैरियर हो जो आप नहीं कर पा रहे हो, कि किसी के लिए कि जिम है ऐसी चीज जिससे मैं बहुत टाइम से सफर कर रहा हूँ, कर ही नहीं पाता हूँ, तो मैं अपना फोकस उधर लगाऊंगा ही क्यों। आई वुड यूज अदर रिसोर्सेज, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ to build the confidence which would boost me to be able to overcome that barrier of not gymming. So that's what we'll use, कि हम 7-8 चीज़ों का एक्शन ट्रैक करेंगे। और वो वाली चीज़ भी किसी यूजफुलनेस की नहीं कि आपने 10 चीज़ें करना चालू किया, ट्रैक कर नहीं रहे हो, 3-4 दिन बाद छोड़ा, इतना कॉन्फिडेंस डाउन हुआ मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ यार, छोड़ो वही नॉर्मल लाइफ में चले गए। बोथ केसेस आर नॉट गुड फॉर यू। सो वन केस दैट कैन बी गुड इज कि यू ट्राई इट आउट, इस जैसे व्हील ऑफ लाइफ में से आपने एक एक चीज़ पकड़ी, या किसी में 2 गोल्स पकड़े और उनको एक्शंस में कन्वर्ट करके लिख दिया, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू जस्ट स्टार्ट सीइंग। पहले समझते समझते तो हैं, एक बार ये तो देखें कि अवेयरनेस के थ्रू ये तो देखने की कोशिश करते हैं कि यार मैं हूँ क्या, और मैं कहाँ पर, व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर आई एम रियली स्लैकिंग। ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं नहीं करता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं इजीली कर सकता हूँ। एंड टू टेल यू दिस फैक्ट जो मेरे इधर से निकल के आया, अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ मैं, कि आई एक्सरसाइजेस जो है वो काफ़ी, मुझे पता है उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक इट्स वेरी अंडरस्टेटेड। बट अगेन किसी भी जिमिंग या एक्सरसाइज की तरह इट्स बोरिंग, वाई टू डू इट, कैसे करना है। बट समहाउ आई रियलाइज्ड इट कि जब मैं उसको ट्रैक करने लगा, मैंने फर्स्ट डे किया, सेकंड डे किया, थर्ड डे नहीं किया, थर्ड डे ना करने पर जब मैंने उसको शाम में भरा था, आई वाज लाइक हाउ कुड आई स्किप दिस, क्योंकि आई कुड स्टार्ट सीइंग डिफरेंसेस इन नेक्स्ट 3-4 डेज कि यार बेनिफिट तो हो रहा है इसका कुछ। सो आई स्टार्टेड पुटिंग, एंड दिस वाज वन ऑफ दैट हैबिट, मतलब दिस वाज वन ऑफ दैट एक्शन व्हिच आई वाज देन kind of regularly doing, up and down, or I had done it 4 out of 7 days. बट ऐसी काफी सारी चीजें थी, एक था कि आई वुड बी डूइंग एन ऑनलाइन कोर्स, आई हैव ट्रैक्ड इट 0 out of 7, एंड आई नो दिस इज अ बिग बैरियर। जैसे जिमिंग किसी के लिए बड़ा बैरियर होगा, डाइटिंग किसी के लिए बड़ा बैरियर हो सकता है, मेरे लिए कोर्स क्रिएशन, ऑनलाइन कोर्स, कोई स्किल कोर्स करना जो मैंने सोच रखे हैं 3-4, वो एक बड़ा बैरियर, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनको 2-3 टाइम से। एंड आई हैव बीन गिविंग, what it answered me was कि इतनी सारी activities I was able to do when I was tracking, this I was not able to do, so maybe I just need to fix one time, or maybe I just need to see कि कहाँ पर, like why am I not, क्योंकि ये online course, if you will see it's not specific, I have not written which course to do,
दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि यार बाकी चीजों में आई एम वेरी स्पेसिफिक, आई हैव टू डू आई एक्सरसाइज, आई हैव टू ब्रश टीथ, आई हैव रिटन इट जस्ट सो दैट आई हैव अ रूटीन, आई हैव समथिंग कि मैं ये इसके बाद एक एक एक्शन कर रहा हूँ. आई हैव रिटन प्रेयर इन दैट, and I've written meditation greater than 15 minutes in that. So these are very specific actions. But जब मैंने लिखा ऑनलाइन कोर्स, बहुत ही गलत तरीके का एक्शन लिखा, बहुत ही गलत हैबिट फॉर्मेशन, एंड आई एम आल्सो लर्निंग. एंड देन आई रियलाइज, ऑफ कोर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं लिखा नहीं मुझे कौन सा कोर्स करना है. मुझे फोटोग्राफी का कोर्स करना है, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करना है, मुझे एनालिटिक्स का कोर्स करना है, किसका करना है, व्हाई डिडंट आई राइट इट? बिकॉज वंस आई राइट दैट स्पेसिफिक थिंग मुझे करनी है, आई वुड नो कि मुझे इस वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर के इसका ये वाला वीक स्टार्ट करना है. अदरवाइज व्हाट दिस गिव्स माइंड इंडिकेशन, ओ ऑनलाइन कोर्स करने चलो बैठते हैं, ओ 5 कोर्सेज, फिर मैंने 6 कोर्सेज देखे, मुझे 10 कोर्सेज देखे, तो अच्छा लगा कि ओह ये भी कर लेंगे. एंड समहाउ दिस इज हाउ इट हैपेंस, माइंड ट्रिक्स यू इन नॉट डूइंग समथिंग व्हिच यू आर रियली नॉट कंफर्टेबल विद डूइंग. सो वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड विद दिस ट्रैकर. ओके, या थैंक्स शिवांश. ओके, ठीक है. अभी if I'll just go up and we are just on the time, अभी टाइम बस खत्म ही होने वाला है. And if anybody has any questions, please ask. I'll be answering the questions which have been asked in the chat box before and here. अगर सभी ने ये लिख ली हैं तो if I would just request everyone to put it as an action and not as a habit, not as a vague habit just I told you. So for example, again, for just sake of a sample, I am telling you कि मेरे कुछ specific items किस type के थे. Okay, so that you know कि okay बहुत ही basic था ये तो, and why is he tracking that basic thing, so that you would also know. What priority should spirituality be for a successful career according to you? What priority should spirituality be for a successful career according to you? यार आई थिंक स्पिरिचुअलिटी को एक बार बहुत ही क्विकली डिफाइन कर लेते हैं. कई बार लोगों को स्पिरिचुअलिटी को लेकर के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग वेयर पीपल टॉक अबाउट सम अदर वर्ल्ड एंड देन दे डोंट नो इट्स मोर ऑफ अ बिलीफ सिस्टम एंड ऑल दैट स्टफ. I like the Hindi meaning or a Sanskrit meaning of spirituality, which is more authentic. That is अध्यात्म. स्पिरिचुअलिटी का जो आप संस्कृत में देखो, आपने सुना भी होगा अध्यात्म. अध्यात्म का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ. आत्म का अध्याय, आत्म का स्टडी. यू स्टडिंग योर सेल्फ. वट वी आर डूइंग हियर इज दिस इज स्टडिंग. सो when we say कि यार spirituality को इसमें कैसे fit in करें, so spirituality तो according to me is something which is, you know, which kind of transcends and which is like is हर कण कण में है, like of all of these well-being aspects it is in कण कण, because it is a self. आप जब खुद को study कर रहे हो, आप different अपने aspects को study कर रहे हो. So when you say what priority should spirituality be for a successful career, I would say don't, as if you really read the content, आप और content पढ़ते हैं या आप और किसी को follow करते हैं या you do your own self study around this stuff, then I think it is an important part. Like it holds a very important place because it helps you in grounding and also helps you in designing how you, it helps you in designing the correct life. What I mean here is when you have that dimension of spirituality or dimension of that adhyatm with as your grounding base, as your foundational base, what it helps you is कि okay, मेरे हेल्थ के गोल्स कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, वो आपको एक वो देता है बेसिस. फाइनेंस के गोल तो कोई मनी का गोल ये होना सकता है कि मुझे 100 करोड़ कमाने, बट क्यों? मुझे 10 करोड़ तो होने चाहिए, बट क्यों? आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं होना चाहिए. What I'm trying to say is that this will give you an answer that what is that requirement, on what basis आप कैसे choose करोगे. Let's say if you don't have a foundation on which you base your lot of your decisions or your goals, how would you identify कि मुझे next, like मुझे इसका गोल रखना कैसे है. सो I'll come to that, Gaurav. So मुझे उसका बेस रखना क्या है कि मेरे करियर का गोल है कि मैं ये भी बन जाऊं, मैं डीजे भी बन जाऊं, मैं टीचर भी बन जाऊं, मैं ये भी कर लूं. तो उसका बेस क्या है? It is coming out of your aspirations and desires, or does that really have some kind of a grounding? So spirituality provides you that grounding. So I think priority of spirituality, it can't be like
उसकी प्रायोरिटी ऐसे नहीं लिख सकते स्पिरिचुअल, आई विल बी स्पिरिचुअल टुडे. इट विल हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू गोल्स. So I let me tell you what was my breakdown of it. So my breakdown of it was uh, meditation, and I will slash it with concentration. मेरी आगे extreme आने वाले जहाँ पे I'm differentiating between what a concentration is, what meditation is, and how both are different, and how of course concentration comes first and then you go into meditation and all that. And meditation is definitely difficult, but how can you learn doing concentration? So I had written concentrating greater than 15 minutes. So that was my first step, क्योंकि ये वो एक initial step है spirituality का. Because once you start spending your a quality time with yourself in stillness, in silence, a lot of these things जो हम ये सब बना रहे हैं ना, ये ऑलरेडी बहुत क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि ये जो दिमाग का जो क्लटर भरा हुआ है, डी क्लटर होने लगता है. और जब ये डी क्लटर होने लगता है तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन और लेट्स से ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग कैन बी वन ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रायोरिटी. कि ये मेरा तो स्पिरिचुअलिटी में 10 चीजें नहीं लिखनी है, एक चीज लिख दी ब्रीदिंग. आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, or just counting your breath, or abdominal breathing, or let's say viparit karni, there's one, or sleep. I would count sleep in spirituality, because sleep would give you that sanity of mind which we do not get when we are not sleeping well. So just as simple as that, but it should be a priority. Like one goal should definitely be there, and it need not be ki mujhe, so prayer can be, so prayer is one of my goal. I want to be praying, I want to have affirmations, and that affirmation is more like showing gratitude. Somebody had asked, would we be talking about gratitude journaling? So gratitude journaling is one goal of being spiritual. Again, it transcends a lot of these aspects that we have जो हम इसमें देख रहे हैं. So yeah. So Gaurav, you're saying, so wait, are these priorities yours? What do you mean by that, Gaurav? And guys, just give me 30 seconds. I need to plug in charger here. Yeah, hi. So Gaurav, I didn't understand your question, but if you want to elaborate, you can. So as final, I hope you were able to put some kind of, आपने अगर 5 भी actions put किए हैं, I'll be happy, and I think we are off to a good start. Just to give everybody here some sense, some example of what kind of very specific actions that I had put. As I mentioned, eye exercise, teeth brush, shower, meditation greater than 15 minutes, intermittent fasting. So intermittent fasting very specific, very specific, कि आप इस टाइम की टाइम विंडो में खा रहे हो, और so and हम later करेंगे भी. So I have done that, and I practice that part in my life anyway. But I was just seeing कि मुझे जो लगता है कि ये तो मेरी lifestyle है, इसको मैं कैसा करता हूँ, and I got very astonishing results there. But so it was specific. So one was no sugar. Very specific, no sugar. What does that mean is, in my no sugar, there is a very clear thing कि whatever that processed form of sugar would be there, that would be not there. When you can have your own standards, that no sugar, no, not even fruit sugar, something like that. ये मेरे goals हैं. I am not giving you any direction. What I'm saying is these were very specific. That at the end of the day, I could just count कि ये करना है या नहीं करना है, किया है या नहीं किया, that kind of stuff. Okay. And so one which came in the social जो हम wheel of life देख रहे थे, that was talk to one friend every day, or that can be one connection, and I didn't do good there much. So that way, I want to send one network email every day. So very clear. एक networking का एक email I have to send, or I have to network with someone at least one day. This is one of my in the professional goals. This is in the career goal. And similarly, there were different others. So this is how I had created my goals in ये कि है objective कुछ है किसी चीज़ का कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे friend से बात क्यों करनी है, because I really have good friends and I want to
continue with the bond that I have with them. That was the objective. What was the key result? The key result was call one friend every day. And there are a lot of friends, and you will see कि मैंने कुछ दिन miss करूंगा, but somehow every this will give a kind of frequency of 7 days में, या हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार you have talked to someone. That can be family also. Okay. Now, finally, telling you what is that final one habit that I want you to please do it, and you should write at the end of it here, and you should track it is that did you fill your tracker or not? Very simple, very straightforward. And as I told you, Gaurav, you might think कि अरे यार ये क्या हैबिट हुई, इससे मेरा कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन हटेगा. प्रोक्रेस्टिनेशन हटाना कोई आसान चीज़ नहीं है. जस्ट फर्स्ट, मतलब इट्स नॉट लाइक अ मैजिक. ऐसा बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में मैजिक नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली मैजिक क्रिएट करती हैं. एंड दिस वन थिंग, व्हाट दिस इज टेलिंग यू, व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू हियर इज, हैबिट हियर इज, कि आपने एंड में एक ये एक्शन लिखा हुआ है, फिलिंग द ट्रैकर. ये तो आप कर रहे हो. सो एट द एंड ऑफ इट, लेट्स से आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाए, एटलीस्ट यू आर मेकिंग वन हैबिट. यू आर कमिटिंग टुडे टू योरसेल्फ दैट मैं ये वाली एक हैबिट तो फॉर्म करूंगा. आउट ऑफ आज मैं कुछ भी, इफ आई एम नथिंग इज गोइंग गुड इन माय लाइफ, दिस इज एटलीस्ट वन थिंग. एक हैबिट तो बनाता हूँ. एंड प्लीज आई माइंड माइंड दिस दैट बहुत सिंपल है. 7 days के लिए जस्ट ट्राई दिस आउट. आप कुछ भी नहीं भर रहे होगे तो एटलीस्ट आपको ये असेसमेंट तो मिलेगा ना कि ओके, हाउ एम आई डूइंग. एंड समहाउ विद दैट motivation, or maybe with that fear, or maybe with that mindfulness, or maybe with that self awareness that you will get in the next 4 5 7 days, कि how am I doing on different aspects. और अगर आपने आपके इस ट्रैकर पे, you should be getting like, मतलब 7 out of 7 you should be doing, having that tracker, कि मैंने ये ट्रैकर फिल किया. एटलीस्ट वो तभी वो हैबिट कहलाएगा. सो मेक वन हैबिट. दैट हैबिट will help you get up to some level, which will get you up to pursuing something which has been causing a barrier to you. This is what the journey is. If you think यार मैं ऑलरेडी, मेरे पास हैबिट्स हैं, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, then it is something that tracking would still make sense for you. So wrapping up very quickly, what we have done today is we try to understand हैबिट रिचुअल में डिफरेंस क्या है, माइंडफुली हैबिट को ट्रैक करने का क्या मतलब है, दैट वन. फिर हमने ये समझा कि हैबिट्स को अगर बनाना है तो उसके पीछे कौन से फ्रेमवर्क पे बनाए, उसका गोल में बनाऊंगा किस बेसिस पे. हैबिट्स वेग क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर वेग नहीं है तो फिर स्पेसिफिक हैबिट्स कैसे होंगी. OKRs, रीड अबाउट इट, आई विल राइट हियर OKRs, जस्ट रीड अबाउट इट आफ्टर द स्ट्रीम. ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, जस्ट ट्राई टू सी कि कैसे बनाते हैं. एक ऑब्जेक्टिव है आपके दिमाग में, मुझे फिट होना है, या मुझे सुबह जल्दी उठना है. नहीं, सुबह जल्दी उठना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे कुछ और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मुझे उठना क्यों सुबह जल्दी. सिमिलरली डिफरेंट अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके आपने की रिजल्ट लिखे हैं जो आप मेजर कर सकते हो. दैट शुड बी मेजरेबल व्हाट यू हैव डन हियर. ओके. एंड ये हमने सीखा. फिर हमने ये देखा कि अगर इफ आई होप पीपल हैव मेड अ शीट हियर. इफ नॉट, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, search Wheel of Life on Google. I'll share this Figma file with you, with everyone here. अगर किसी को, if somebody wants to visit the file I was sharing and they want to just see around it, okay. If people have not seen my first stream, just go and see कि हमारे वेलबींग के फ्रेमवर्क्स क्या हैं, हमें लाइफ डिज़ाइन किस बेसिस पे कर सकते हैं, एटलीस्ट वेयर वी कैन स्टार्ट. And making a habit tracker is one of the initial early things that you can at least get started with. If nothing is moving in your life, this will make something moving in your life. You will have something to look forward to. So this is what we all of us did. मैं finally I'm just looking at the chat box because I remember कि मैंने कुछ skip किया था chat box में. So I'll just, yes, they should have. Priyansh had written, I'll try riding my bike more often. Okay, so Priyansh, a better goal for you would be, let's say, 30 minutes cycling, 40 minutes cycling. I know it's like, oh, 30 minutes gymming वैसे ही तो हो गया. Yeah, again, this is more often is not clear. It's just that 30 minutes cycling every day. Now, have you done it or not? You would know कि तुमने often किया है या नहीं किया है. You would know that. More often is not clear कि वो क्या है. So we need to be more clear in that. I've written down to study for the diploma I have applied for. Yeah. So what you will write is 1 hour study for
1 hour, let's say, whatever, how you want to write, 1 hour study, or 1 hour question solving, or whatever that you, but you need to allot a time to it, कि ये एक टाइम है, 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ूंगा. I would do that. So to study for this diploma will not help, but to do this would be helpful. 1 hour study, 2 hour study. अभी मैटर नहीं करता है कि यार मैं शाम दोपहर के 3 बजे से 5 बजे का टाइम डालूं या मॉर्निंग 9 बजे से डालूं. जो अभी व्हाट यू थिंक यार ये मेरा प्रोडक्ट टाइम है, जब डालो, डाल के ये तो देखो कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वो. एंड विद इन, इफ यू सी कि यार ये हो रहा है, तो विद इन, इट्स नॉट कि 7 days का वेट करना है. विद इन 4-5 days, इफ यू थिंक दिस इज गेटिंग फॉलोड और नॉट गेटिंग फॉलोड, जस्ट टेक एन एक्शन ऑन इट. बट माई सजेशन वुड बी कि एवरी 7 days यू गाइज जस्ट ट्राई टू सी. और अगर आप वो हैबिट फॉलो कर रहे हो कि आप ट्रैक कर रहे हो एवरी डे, देन यू विल डू फाइन. Like you will be able to make use of it. Anything else? If there's a lot of stretching, gymming, what's the difference between pranayama? I will start. I was saying, okay. Um, Somebody had asked about IX. Shivansh had asked about exercises. So I'll quickly tell you what eye exercises is. So eye exercises, हो क्या रहा है आजकल when we're looking, and this is happening if anybody is a parent here or anybody has a smaller sibling, या आपके किसी भी acquaintance में किसी के बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत important है. आपके लिए तो है ही, उनके लिए बहुत ज़्यादा important है, because we are interfacing a lot on our mobile screens or on our laptops, and what it does is that it causes your आईज, जो आई की आई मसल्स हैं, वो फटीग हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग यूज टू मच, एंड ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग मूव्ड इनफ. दे आर गेटिंग फोकस्ड ऑन वन. आप जब देख रहे होते हो तो आपका जो हॉराइजन है वो बहुत छोटा है, और जब आप नॉर्मली स्क्रीन नहीं देख रहे हो तो आपका जो हॉराइजन है, अब व्हेन यू सी, let's say you are in a room or somewhere, your horizon is big, so your eyes keep on moving in that way. But when you are very much focused on your screen, your eyes are just focused and they are not moving enough. What happens is that eye muscles get weak. आई विजन की तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बट व्हाट इट मेजरली कॉजेज इज दैट यू स्टार्ट गेटिंग योर आईज स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, यू स्टार्ट गेटिंग हेडेक्स, यू स्टार्ट गेटिंग फटीग्ड, यू स्टार्ट फीलिंग कि यार बॉडी इतनी फटीग फील नहीं कर रही है, बट मेरा ओवरऑल फेस और मेरी जो इन जनरल मोटिवेशन, इट्स गेटिंग फटीग. सो देयर आर आई एक्सरसाइज फॉर इट, एंड I'll share it with, you can search it on Google, but usually I'll share it on my stream, and we'll also do a live session on workshop, on working session on that. आइडिया क्या है, आईज को इधर से इधर मूव करना है, इधर से इधर मूव करना है. इफ यू विल डू इट, यू विल फाइंड कि ये मोशन तो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया बहुत टाइम से आई का, एंड यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट. एंड सिमिलरली ऐसा है फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज है, दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर थंबनेल, यू ब्रिंग इट हेयर, then you take it away, you're focusing there, it improves your concentration, also helps again with your eyes. So Shivansh is saying that my eyes are always sore. So apart from if it is not a serious concern where you need to see a doctor, if that's not the case, definitely try them. Eye exercises also create tears because of the eye muscle movement, which is helpful for you. So इसका एक पूरा sequence है, but of course this stream would not be the right place to discuss that. And yeah, I think Anishka had asked about at the start, are we going to talk about journaling in any way? Anishka, I'm not sure if we covered it enough, but my idea was not to talk about specific thing कि इसका फायदा क्या है, वो आगे की streams में we'll be taking around कि what practices help you with what thing. But are we going to talk about sorry, for journaling we mentioned ki this journaling is something that you can have in your let's say a health section or your spirituality section or your any other section where you seem fit. What journaling would help you would be to at least get the clutter out of your mind into a notebook. बचपन में बोलते थे ना कि लिख लिख के याद करो, बेटर याद होगा. सो अभी क्या है कि अभी हमने हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा कंटेंट हम व्यू करते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, या थ्रू स्क्रीन्स और थ्रू फिजिकली, या इतने सारे स्ट्रेसेस लेके चलते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म है नहीं, दैट आवर माइंड्स आर फुल एंड एवरीथिंग इज सो क्लटर्ड. नाउ once you write it down, just randomly start writing down. पहला journaling का पहला step ये होता है, just are randomly writing it down in your diary or in your copy. What it would do is it's a brain dump कि मैंने इधर जो भी था डाल दिया. And you will, if people have not tried it, please do it once. You will really find it helpful. एकदम से एक जो दिमाग को रिलीफ मिलेगा,
तो ब्रीदिंग करके मिलता है या किसी और एक्सरसाइज करके मिलता है, यू विल फाइंड इट. बट एनीवे, getting a sense of your day and having that as an action, journaling or gratitude journaling or just a diary keeping, 30 minutes diary keeping or just everyday diary is one good action to have in your habit tracker or in your ritual tracker. So yeah, this is something which you can. What we'll be doing in the next streams, future streams, is we will dive into each and specific actions which can be helpful for people for different other things. जैसे कि स्लीप रूटीन क्या होता है, स्लीप रूटीन में किस टाइप के एक्शंस हो सकते हैं, स्लीप रूटीन क्यों होना चाहिए. सिमिलरली हैबिट के बारे में हमने अभी, जर्नलिंग के बारे में किस किस टाइप की जर्नलिंग कर सकते हैं, उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्यों लिखना चाहिए, क्या होगा फ़ायदा. So similarly other, so we'll keep on getting this theme. If anybody has any questions, um, please ask. I've been speaking for a long time, and I hope this was helpful. And if this was helpful for you guys, please follow me on Creator, and just if you have any feedback, any comments here, then feel free to write it honestly. If this you found it helpful, that's okay. If you found that was not helpful, please write it here. I'm totally open towards ideas. And if you want to see anything else, if you want me to talk about anything else in the future, you can also write some ideas here. I'll stay here for one more minute. And thank you so much. Most of the people who had joined here are still here. I'm so thankful to you. My gratitude to every one of you here. It really means a lot that you have been here, and I hope this could be helpful. Yeah, thank you, Shivansh, and thank you, Gaurav, thank you, Anishka, and I hope you'll keep coming to the next streams. I just will tell you what are the